binomial theorem. Binomial theorem we have studied in high school, but now we have looked at it in generalized form. X plus y raised to power n. X plus y raised to power n. So it's a binomial term. We have two kind of variables, x and y, and the order is n. So we notice some important things कि आपकी टोटल पावर हमेशा n रहती है. जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन की हर एक टर्म में टोटल ऑर्डर, टोटल पावर n रहती है. फॉर एग्जांपल x रेज्ड पर n, सो y की पावर 0 है. x रेज्ड पर n minus 1, y रेज्ड पर 1, so total power is still n. x raised per n minus 2, y raised per 2, total power is still n, and so on till we reach till last term, which is y raised to power n. Finally, so दूसरी चीज हमने ये ऑब्जर्व की थी, द कोएफिशिएंट्स. n choose 0, n choose 1, n choose 2, n choose n minus 1, n choose n, so on. So we said ke binomial expansion may we get combinations, and that's why we call combinations as binomial coefficients. Kis tarah? So at each term of this expansion we are looking how many y's we have selected. Yeah, in other words we can also say how many x's we have selected. जैसे पहली टर्म में x raised to power n है, तो y की पावर क्या है? 0. We have selected 0y. So n choose 0. Out of n we have selected 0y. या हम क्या कर सकते हैं? We can select 1y. अगर एक y है तो x फिर हमारे पास n minus 1 होंगे. So in how many ways we can choose 1y? n minus 1. Y square. So we are choosing 2 y's. In how many ways we can choose? In n choose 2 ways. And at the end, n choose n की वैल्यू हमें पता है 1 होती है. So y raised पर n. ये सारे हमने y's ही चूज किए. So there is n choose n ways to choose y. ये y's हम कहाँ से चूज करें? x plus y raised पर n. Exponent है n का. So what is exponent actually? Exponent last time हमने discuss किया था, and you know exponent means we are multiplying one thing again and again and again. How many times? जितनी हमारे पास power होती है. For example, if we are saying 3 raised to power 4, it means 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. 3 को हम 4 times multiply करते हैं. So x plus y raised पर n, it means x plus y हम n times multiply कर रहे हैं. x plus y को आपस में ही हम n times multiply कर रहे हैं. This is called exponent. So हर एक जो x plus y raised पर n means हमारे पास n factors हैं, and each factor is x plus y. और हर factor से we are choosing either x or y. तो जो हम कहते हैं n choose 2, तो कि हम y कितने तरीकों से choose करें? 2 तरीकों से out of n. n factors में से हमें 2 factors y supply करते हैं, और बाकी जो n minus 2 factors होंगे they will supply as x. अच्छा, यहाँ पे just something interesting about mathematical facts. हम बचपन में छोटी क्लास में हमने पढ़ा multiplication. Multiplication क्या होती है? Like 3 times 4. 3 times 4 क्या होता है? 3 times 4 means हम 4 को 3 times add कर रहे हैं. 4 plus 4 plus 4. एक ही चीज को हम जितनी बार add करते हैं, that's called multiplication. That's how we define multiplication in our like class 2 में हमने define किया था. So it was 3 times 4 means एक ही चीज को हम 3 बार add करें. 3 times 4 को हम 3 बार add कर रहे हैं. Fine? 3 times 4. And then exponent is, if I'm saying 4 raised power 3, it means हम 4 multiplied by 4 multiplied by 4. एक ही चीज को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So exponent is multiplying same thing again and again. Multiplication क्या थी? Adding one thing again and again. And exponent क्या है? Multiplying one thing again and again. कितनी बार? n times, जितनी पावर होती है. Just imagine what should be the next step.
एडिशन अगर हम बार बार करते हैं तो वी कॉल इट मल्टीप्लिकेशन, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन बार बार करें वी कॉल इट exponentiation. Just imagine what should be the next thing. Yeah, mathematics is quite like it's about our wild imagination. We can think of anything in maths. I mean, we can go beyond our physical limits. So अगर exponentiation again and again हो, n times हो, तो सोचें ये क्या चीज होगी, एक बहुत बड़ी चीज होगी, कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ती है तो we call it exponential growth, isn't it? We call it exponential growth. तो अगर एक्सपोनेंट ही एक्सपोनेंशिएशन में जा रहा हो और कितनी बार जा रहा हो, n times जा रहा हो, so that's something going to be huge. This is called Graham's number. अगर आप विकिपीडिया पे you can search it, Graham's number क्या होता है, and this is just a general information for you people. So विकिपीडिया पे या यूट्यूब पे सर्च करें, यूट्यूब पे you will find very good link about Graham's number. बड़े अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. So अगर एक्सपोनेंट आप again and again करते जाएं n times, so it's going to be a very huge number. It's called Graham's number. Graham एक mathematician है, he's still alive, American mathematician है. So that was just a general knowledge thing. So back to binomial theorem, x plus y raised to n. So the good thing about this formula is you don't need to memorize x plus y square क्या होता है, x plus y cube क्या होता है, x plus y raised to 4 क्या होता है, उसकी एक्सपोनेंशियल you don't need to memorize. अब n की आपके पास कुछ भी पावर हो, you can always expand it. x plus y raised to 100 क्या होता है, you can just expand using this combination. So you start with the power n, choose 0, n choose 1, n choose 2, going till n choose n. और x की पावर आप कम करते जाएंगे, y की पावर आप बढ़ाते जाएंगे. So it's quite simple thing. Okay, and then we did something like this. आपने एक्सरसाइज जहाँ पे क्लास में हमने की थी, x12 y13 का कोएफिशिएंट क्या होगा in x plus y raised to 25 expansion. तो 25 choose 13 कि 13 y हम चूज कर रहे हैं. And then in the same way we did this thing कि 2x minus 3y raised to 25. इसमें x12 y13 का कोएफिशिएंट क्या होगा? So we get this coefficient. तो अगर इसमें हम x12 y13 वाली टर्म देखें कि वो क्या होगी, so it's going to be 25 choose 13 और 2x raised to 12 minus 3y raised to 13. इसमें से x raised to 12 को अलग कर लें, y raised to 13 को अलग कर लें, so we get 25 choose 13, 2 raised to 12 minus 3 raised to 13. So ये जो numbers x12 y13 के साथ लिखे हुए हैं, these are going to be coefficients. 25 choose 13, 2 raised to 12 minus 3 raised to 13. एक चीज हमने ये की थी. दूसरी चीज, it was quite interesting in last class. We are going to distribute gifts among children. हमारे पास n different presents हैं, n हमारे पास gifts हैं, and we have to distribute it among k children. In how many ways we can distribute it? तो हमने we did it in 2 different ways and we get the same answer. So जितने हमारे पास gifts हैं, we had n, so n factorial. We got like this answer. Yeah, this answer over here. So n factorial over n1 factorial, n2 factorial, nk factorial. कि पहले बच्चे को अगर हम n so अगर पहले बच्चे को हम n1 गिफ्ट्स देने हैं, दूसरे को n2, तीसरे को n3, केथ बच्चे को nk गिफ्ट्स देने हैं. So total ways to distribute k gifts for n factorial over n1 factorial, n2 factorial, nk factorial. इसी चीज को हमने दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया था and we get the same answer. और then we say कि सेट के जो हम anagrams करते हैं, anagrams बनाते हैं with a given word, in how many ways we can form different words with those letters. So it was just the same thing. So it is
n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल के पहला कैरेक्टर कितनी बार आता है, दूसरा लेटर अगर n2 टाइम्स आता है तो n2 फैक्टोरियल, तीसरा लेटर n3 टाइम्स आता है n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. So this was an important formula. This we call it permutations of objects in which certain objects are indistinguishable. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे ही हैं. So it's called permutations with certain objects indistinguishable. जैसे आपके पास एनाग्राम्स में कुछ लेटर बार बार आ रहे हैं तो उन लेटर्स को आप आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, m को m से नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते ना. सो इफ यू स्विच द पोजीशन ऑफ m's among themselves तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो ये इज समथिंग परम्यूटेशन जिसमें कॉम्बिनेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं. हमने ये देखा था कॉम्बिनेशंस को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे. ओके, सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. It's quite interesting and very important thing. So the problem is, सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं. प्रॉब्लम इज कि हमारे पास अब n ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो एक जैसे ही हैं. ठीक है, जैसे पिछले प्रॉब्लम में क्या था, वी हैड n प्रेजेंट्स n गिफ्ट्स जो एक दूसरे से फर्क थे. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो n जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही तरह के हैं. वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम. सो सपोज हम कह लेते हैं कि हमारे पास n कॉइन्स हैं एक ही वैल्यू के. हमारे क्या 10 रुपए का तो कॉइन नहीं होता, 5 रुपीज का कॉइन होता है. सो वी हैव कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज, सारे 5 रुपए के कॉइन्स हैं. सो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉइन्स ना, उनकी एक ही वैल्यू है. So we line up these coins in one line और हमारे पास के उसी तरह बच्चे हैं जिनके दरमियान में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है. So in how many ways we can distribute n coins among k children? पहले बच्चे को हम n1 कॉइन दे सकते हैं. So n1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. दूसरे को हम n2 कॉइन दे सकते हैं, तीसरे को n3 एंड सो ऑन. केथ बच्चे को हम nk कॉइन देंगे. सबसे पहले मिनिमम कॉइन्स एनी चाइल्ड शुड गेट इज 1. कम से कम हर बच्चे को एक ही कॉइन तो मिलना चाहिए. मैक्सिमम कॉइन किसी बच्चे को कितने मिल सकते हैं? अगर सपोज हमारे पास 100 कॉइन है और 10 बच्चे हैं, ठीक हो गया. सो आई नीड योर आंसर. उस्मान सादिक, यार तुम तो अच्छे बच्चे हो, यू कैन आंसर इट. सो वी हैड 100 कॉइन्स. So everybody should get at least 1 coin, एक जैसे ज्यादा. And we have 10 children. So minimum coin तो आपके पास एक ही आएगा. Maximum coins, how many coins can you get? It's a simple problem. जी, I hope कि क्लास में मैं अकेला नहीं बैठा, कुछ और लोग भी हैं. Okay, and Nasir is saying 91. Yeah, that's true, 91. There should be 91 coins. कि अगर हर बच्चे ने एक ही कॉइन लेना है, तो हम किसी एक बच्चे को देख रहे हैं, तो सपोज 9 बच्चों ने एक ही कॉइन ले लिया, तो जो बाकी के कॉइन्स हैं वो हम 10वें बच्चे को दे सकते हैं. सो आंसर शुड बी 91. कि 9 बच्चों ने एक ही कॉइन ले लिया तो 100 minus 9, 91 coins we can give to 10th child. Maximum coins we can get is 91. So in general, if we have n coins and there are k children, so maximum coins a child can get is n minus k plus 1. ठीक है, एक्चुअली इट इज n माइनस और ब्रैकेट के अंदर k minus 1. जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इट बिकम्स n minus k plus 1. तो जैसे n की वैल्यू 100 है, k की वैल्यू 10 है, तो 100 minus 10 plus 1, 91. So maximum coins we can get is n minus k plus 1. चलें, ये तो एक बात हुई. So in our question we are asking is every child should get at least 1 coin. In how many ways we can distribute coins among these children? So question is
how many ways these coins can be distributed among k children. तो हम किस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट करें? We can do something के पहले बच्चे को हम कहते हैं कि आप प्लीज you can pick up your n1 coins. Start from the beginning and you can choose n1 coins. जहाँ पे पहला बच्चा खत्म होगा अपने कॉइन्स उठाना, वहां से दूसरे बच्चे को कहेंगे now you can start choosing your coins, picking up your coins. Choose swap नहीं करना because all coins are same. He will choose pick up his n2 coins and next child will choose his n3 coins and so on. जैसे जहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा होगा, Alice, Bob, Carl and Diane are there. A B C D. चार बचे हैं एंड कॉइन्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉइन्स हैं, ठीक हो गया. सो वी कॉल एलिस ए, वी कॉल ए प्लीज कम एंड पिक अप योर कॉइन्स. वो या तो एक कॉइन उठाएगी या दो या तीन, जितने भी उठाएगी, फाइन. एंड देन सो सेकंड चाइल्ड विल स्टार्ट इट्स पिकिंग अप हिज कॉइन्स. यहाँ पे वो खत्म करेगा, then next child will start picking up his coin and then next child and then next child till we finish. So in other words we can say कि how many starting points do we have, possible starting points. कि जब हम बच्चों को कहते हैं कि now you can come and start picking up your coins, so how many starting points do we have? सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशंस हो कितनी सकती हैं और हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशंस हैं कितनी. जहां आपको रेड लाइन नजर आ रही है, सो आई कैन से एक स्टार्टिंग पॉइंट, ऑफ कोर्स पहले बच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट तो यहां से है, उसने पहले पॉइंट से शुरू करना है ना. फॉर फर्स्ट चाइल्ड ऑब्वियसली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. अगर उसने सिर्फ एक कॉइन उठाया तो नेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट विल बी आफ्टर दिस फर्स्ट पॉइंट. या स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हो सकता है या यहाँ से हो सकता है या कहीं पे भी पहले बच्चे ने अगर पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे ने भी पॉइंट उठाने रोक दिए तो वी विल गेट नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर चाइल्ड. सो दीज आर ऑल पॉसिबल स्टार्टिंग पोजीशंस. यहाँ तक आखिरी बच्चे ने एक कॉइन उठाया या आखिरी बच्चे दो कॉइन भी उठा सकते, तीन भी, बट दीज आर ऑल स्टार्टिंग पोजीशंस. तो हमारे पास टोटल n कॉइन्स हैं. n कॉइन्स के दरमियान में वी हैव डिवाइडर्स या स्टार्टिंग पोजीशन फॉर नेक्स्ट चाइल्ड. हमारे पास अवेलेबल स्टार्टिंग पोजीशंस कितनी हैं? दीज आर गोइंग टू बी n-1. पहली स्टार्टिंग पोजीशन तो फिक्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कॉइन, वो तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गई ना. सो आफ्टर दैट वी हैव starting position here, starting position here, starting position here, starting position here, going up till the last coin. So we have n-1 possible starting positions, possible dividers. We have n-1 possible starting positions. और starting positions हमारे पास होनी कितनी है? ये था available, हमारे पास जिनकी चॉइस है, पर हमने starting positions रखनी कितनी है? हमारे पास children हैं k. पहला बच्चा तो यहीं से शुरू हो गया, पहली पोजीशन से. बाकी के k-1 बच्चे दे कैन कम अप इन एनी ऑफ दोज n-1 अवेलेबल स्टार्टिंग पोजीशंस. उनके स्टार्टिंग पोजीशंस जो n-1 स्टार्टिंग पोजीशंस हैं, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ दोज n-1 स्टार्टिंग पोजीशंस. So k-1 start जो बच्चों की starting positions हैं, we have to place them in available n-1 starting positions. So it's just combination problem कि अगर आपके पास n objects हैं and you have to choose k objects, in how many ways you can choose k objects out of n? Obviously it is n choose k. अब हमारे पास n-1 objects हैं and we have to choose k-1 objects. In how many ways we can choose k-1 objects? So it's obvious n-1 choose k-1. So we have n-1 available starting positions in which we have to place k-1 starting positions for k children.
we have to place k minus 1 starting positions, and we have available n minus 1 starting positions. In how many ways we can do this? n minus 1 choose k minus 1. ठीक है, so हमारे पास जो स्टार्टिंग पोजीशन फॉर किड्स हैं जहां से वो अपने कॉइन पिक करना शुरू करेंगे, पहले बच्चे ने तो पहले कॉइन से पिक करना है, सो वो तो एक्सक्लूड हो गया. फॉर रेस्ट ऑफ द k minus 1 children, they can choose k minus 1 starting positions among n minus 1 available starting positions. In how many ways we can do this? n minus 1 choose k minus 1. ठीक है जनाब, this is clear. So we can make a theorem for this thing. The number of ways to distribute n identical coins, n identical pennies to k children, so that each child should get at least one coin is n minus 1 choose k minus 1. हमारे पास available ways कितने हैं? n minus 1 choose k minus 1 ways to distribute n pennies among k children. ठीक हो गया? So far so good. Any question? कोई question है? That means everything is crystal clear. Let's move on. So let's change our question. अब हम ये कहते हैं कि although हमारे पास n pennies ही हैं और हमारे पास k बच्चे ही हैं, लेकिन अभी हमारे पास प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. वी अलाउ कि किसी बच्चे को कोई कॉइन ना मिले. लास्ट क्वेश्चन में तो ये था ना कि एवरी चाइल्ड मस्ट गेट एट लीस्ट वन कॉइन. नाउ वी अलाउ दिस थिंग कि हो सकता है किसी बच्चे को कोई कॉइन ना मिले. इट्स पॉसिबल. सम चिल्ड्रन मे गेट 0 कॉइन, सो सम चिल्ड्रन मे गेट ऑल ऑफ दीज कॉइन्स. इट्स पॉसिबल कि किसी को भी कोई कॉइन ना मिले. I mean, k minus 1 बच्चों को कॉइन ना मिले और एक बच्चे को सारे कॉइन ही मिल जाए. It's quite unfair division, but you know, in the life, many things are unfair. So we have now n pennies. उसी तरह हमने लाइन में रख दी, and we have k kids. So we can ask, okay, you can start picking up your coins, and you can pick no coin. You have option, or you can pick all coins. You have options. Now, in how many ways we can distribute pennies? अब देखें हमारे जो डिवाइडिंग पॉइंट्स हैं. सपोज अगर हमारा डिवाइडिंग पॉइंट यहाँ पे है, पहले बच्चे ने 2 पेनीज उठाई, तो हमारा डिवाइडिंग पॉइंट नेक्स्ट इमीडिएटली इसके साथ भी आ सकता है कि दूसरे बच्चे को कोई पेनी मिली ही नहीं और तीसरे बच्चे की बारिश शुरू हो गई. तो इट्स क्वाइट पॉसिबल. इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस थिंग? सो देयर कुड बी 2 different ways to count number of ways. So we'll look at these one by one. So पहला तरीका तो हमें इससे quite interesting trick कि हम बच्चों को पहले कहते हैं कि okay, you have to give each child should give us 1 penny. They should give us 1 coin. 5 rupees का coin हर एक बच्चे ने पहले देना है. It's like entrance fees for this lottery, for this competition, or it's money back guarantee thing. Agar aap you at the end of the game you will get back your coin back, your money back, your coin back. आप एक कॉइन हर एक बच्चा दे दे, एंड पे हम आपको कम से कम एक ही कॉइन तो दे देंगे, एंड यू कैन गेट मोर देन 1 कॉइन एज वेल. अगर एक बच्चे एक कॉइन देता है और एक कॉइन उसको फिर वापस मिल जाता है, इट मींस ही गॉट 0 कॉइन्स. और ये हम गारंटी करते हैं कि हर बच्चे ने एक ही कॉइन दिए तो एवरीवन विल गेट बैक एट लीस्ट 1 कॉइन बैक. उनको अपना कॉइन तो वापस मिल ही जाएगा. देन हाउ मेनी कॉइन्स डू वी हैव नाउ? n कॉइन्स हमारे पास हैं, के बच्चे हैं, हर एक से हमने एक ही कॉइन ले लिया. सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव n plus k कॉइन्स, and we have k children. So in other words, we are distributing n plus k coins among k children, and everyone should get at least 1 coin. ये तो वही प्रॉब्लम बन गया जो अभी हमने किया है. When we were distributing n coins among k children, so that every children should get at least 1 coin. ये पिछला प्रॉब्लम जो हमने किया. अभी हमने क्या किया कि now we are allowed कि किसी बच्चे को 0 coin मिले.
तो हमने थोड़ा सा चेंज ये कर लिया कि वी आस्क एवरी चिल्ड्रन टू गिव अस वन कॉइन एंड देन ही कैन सो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे n प्लस के एंड एट द एंड दे कैन गेट बैक एटलीस्ट वन कॉइन जो उनका अपना कॉइन है वो तो उनको वापस मिल जाएगा. So in how many ways we can do this thing? So it's exactly the same problem as before. So पहले क्या था n minus 1 choose k minus 1. अभी हमारे पास कॉइन ज्यादा हो गए n plus k हो गए. So the answer should be n plus k minus 1 choose k minus 1. So distributing n coins among k children such that some children may not get any coin. The number of ways to distribute this thing is n plus k minus 1 choose k minus 1. ठीक है. Okay, so we develop our theorem. The number of ways to distribute n identical pennies to k children where we are allowed कि किसी बच्चे के पास 0 coins भी हो सकते हैं. So number of ways कितने हैं? n plus k minus 1 choose k minus 1. ठीक है. So n plus k minus 1 choose k minus 1. This is quite important formula. ये हमारा बहुत यूज होता है, जगह जगह बार-बार यूज होता है. सर So we will see. Yes. सर ये हमने प्लस के किया है, तो प्लस के तो हमारे के तो स्टूडेंट्स है ना जिनको हमने कॉइन्स देने हैं, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पास कोई कॉइन नहीं है, तो उनको हम क्यों ऐड कर रहे हैं? जिनको कोई कॉइन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कीप द स्टेटमेंट क्लियर. हमारे पास n और k बच्चे जी हैं. सर बताएं. हमारे पास n कॉइन्स हैं और k बच्चे हैं. पहला सिनेरियो जो हमने थोड़ी देर पहले किया, जिसका आंसर हमने n minus 1 k minus 1 किया, उसमें ये था कि हर बच्चे को कम से कम एक कॉइन लाजमी मिलेगा. डन हो गया. सो वी n minus 1 choose k minus 1. अभी हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया. हम ये कहते हैं कि इट इज पॉसिबल कि किसी बच्चे को कॉइन ना मिले. सम चिल्ड्रन विल नॉट गेट एनी मनी. ठीक हो गया. n कॉइन्स हम डिस्ट्रीब्यूट करें के चिल्ड्रन में उसी तरह, लेकिन अब ये हो सकता है कि किसी बच्चे को 0 कॉइन मिले. सही. So in how many ways we can do it? So we play a little trick here. अभी हम देखते हैं कि दूसरे केस में हम देखेंगे हम ये ट्रिक किए बगैर भी हम कर सकते हैं, बट आई मीन दिस इज सम ब्यूटीफुल ट्रिक. हम पहले कहते हैं बच्चों को, तमाम बच्चों को हम कहते हैं कि आप एक एक कॉइन हमें दे दें एंड एट द एंड ऑफ द गेम यू विल गेट बैक योर कॉइन. ठीक है. सो जिसने एक कॉइन दिया और उसने एक कॉइन वापस ले लिया, तो नेट अमाउंट उसकी कितनी हुई? 0 ही रही जो उसने अर्न की. तो अजीब है कि आपको एक कॉइन वापस मिल जाएगा जो आपने दिया है. ठीक हो गया. सो कुछ लोगों को एक से ज्यादा कॉइन मिल जाएगा. सो n कॉइन्स हमारे पास हैं, k कॉइन्स हमने बच्चों से ले लिए. टोटल कॉइन्स कितने हो गए? n plus k. And now everyone should get at least one coin. जो उनका अपना कॉइन है, एटलीस्ट वो तो उनको वापस मिलना चाहिए n plus k कॉइन्स में से. So in how many ways we? सर इसका मतलब है जी सर इसका मतलब है जो हमारी पिछली प्रॉब्लम थी हमने उसको ही आगे लेके चल रहे हैं. Exactly. We are relating this problem to the previous problem. पिछला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया ना, तो इस प्रॉब्लम को भी हम उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. We are linking these two. तो अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे हम एक और तरीके से भी इसको करते हैं. So now we have n plus k coins and we are distributing among k children. तो ये वही पिछली प्रॉब्लम हो गई कि at least everyone should get at least their own coin back. So n plus k minus 1 choose k minus 1 ways. So that's good. That's a pretty good result actually. So the number of ways to distribute n identical pennies to k children so that some children may not get any money. Some children will get more money. Even some child may get all of these pennies. So in how many ways we can distribute in this way? n plus k minus 1 choose k minus 1. ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और I mean we will see कि it's used in so many ways in computer science and maths. थोड़ी देर में अभी हम देखते हैं. These kind of problems are called combinations with repeated objects. कि
वी हैव सम ऑब्जेक्ट्स जिनको हम बार बार चूज कर सकते हैं। किस तरह, लेट्स लुक एट सम प्रॉब्लम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में से हैं, ये प्लीज इनको देख लीजिएगा। हम थोड़े से और प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं परमुटेशन विद रेपिटेशन। ये हम पहले कई बार कर चुके हैं, सो अभी हम फॉर्मली इसको डिफाइन कर लेते हैं। So this statement says how many strings of length r can be formed from the letters of English alphabets. r length के कितने words बन सकते हैं English alphabet से? This quite clear, हमने कई बार किया इसको। So कितने बनेंगे? नोमान कितने बनेंगे हमारे पास? तैयब, एहसन। So if we have length r तो हमारे पास कितने English alphabets बन सकते हैं? R positions है ना लेटर्स की। पहली पोजीशंस पे वी कैन हैव एनी ऑफ 26 अल्फाबेट्स। दूसरी पोजीशन पे वी कैन हैव एनी ऑफ 26 अल्फाबेट्स। रिपीट हो सकते हैं, लेटर्स रिपीट हो सकते हैं। सो थर्ड पोजीशन पे वी कैन हैव एनी ऑफ 26 अल्फाबेट्स। सो R पोजीशन पे वी कैन हैव एनी ऑफ 26 अल्फाबेट्स। तो टोटल ऑप्शंस हमारे पास कितनी होगी? टोटल पॉसिबल वर्ड्स 26 raised to power r, 26 raised to power r. So if we formally define this thing, the number of r permutations of a set of n objects when repetition is allowed. We can choose any of these n objects again and again and again. So we have n raised to power r. जैसे ऊपर वाले प्रॉब्लम में we had n is equal to 26. We had 26 alphabets set, size उसका 26 था. So we can use any of those 26. So 26 raised to power r, n raised to power r in general. ठीक है? Let's look at this problem and we will see कि ये तो हमारा देखा वाला problem है. So problem says how many ways are there to select 4 pieces of fruit from a bowl? And this bowl contain many apples, many oranges, and many pears. ठीक है? And we have to select any of these 4 fruits. In how many ways we can pick 4 fruits? Order matter नहीं करेगा. You will just pick up 4 fruits and then you have these fruits. So it is possible कि आपके पास चारों fruits एक ही तरह के आ जाएं. आपके पास चारों oranges आ जाएं. या it could be some mix of oranges and apples, या apples and pears. या तीनों fruits mix, orange, apple and pear mix up. So in how many ways we can get this? So here you can see the list. We can get all 4 apples, or we can get all 4 oranges, or all 4 pears. 3 apples, 1 orange, 3 apples, 1 pear, 3 orange, 1 apple, 3 oranges, 1 pear, 3 pears, 1 apple, 3 pears, 1 orange. 2 apples, 2 oranges, 2 apples, 2 pears, 2 oranges, 2 pears, 2 apples, 1 orange, 1 pear, 2 orange, 1 apple, 1 pear, 2 pears, 1 apple, 1 orange. So there are 15 ways to pick 4 fruits. Fine. So that was a small problem. We were able to list it down. अगर आपको ये कहा जाए कि you have to pick 20 fruits. Apples भी बहुत से हैं, oranges भी बहुत से हैं, pears भी बहुत से हैं. You have to pick 20 fruits. In how many ways you can pick 20 fruits? No, I mean this list will be quite extensive. बहुत बड़ी list हो जाएगी. I mean it's not wise to list down. So we need some formula to compute how many ways we can have. So let's derive the formula. Let's look at this problem and then we will get the formula. और फिर आप देखेंगे कि हाँ ये फार्मूला तो हमने पहले भी देखा है. So first, what is the question? So we have a cash box in which we have 7 kind of currency notes. $1 bills, currency notes, $2 bills, $5 bills, $10 bills, $20 bills, $50 bills and $100 bills. हमारे पास 7 types के currency bills हैं. And we have to pick 5 bills from this cash box. वो 5 bills हम सब के सब
$1 के भी उठा सकते हैं, या $2 के भी, या $100 के भी. Yeah, we can make some combinations of these bills. हम दो $1 के उठाएं, एक $5 को उठाएं और एक $20 को. So question is, in how many ways we can pick up these bills? So let's see. So this is our cash box. In first compartment, first section, we have $100 bills, then $50, $20, $10, $5, $2, and $1 bills. Okay, and we are going to pick 5 currency notes. Let's see. So we are just looking at different combinations. For example, I can pick two $10 and three $1. Yeah, I can pick one $100, one $50, two $20, $10 के मैं नहीं pick करता, $5 के एक pick करता, and then $2, $1 I do not pick up. Total मैंने 5 bills pick करने. I may pick $100 bill, or I can pick and $2, $10 के दो bills, $2 का एक bill और $1 का एक bill. So I have got 5 bills. इसको मैं represent करता हूँ. This is called bars and stars. उसके साथ किस तरह? I look at how many divisions I have between currency bills. मेरे पास 7 तरह के currency bills हैं, so I have 6 divisions. ये पहला divider है, दूसरा divider, third divider, fourth divider, fifth divider, sixth divider. So I place bars for dividers. I get 6 bars, and wherever I get some currency bills, I will put stars. I got $10 currency bills 2 times, so I put 2 stars for $10. $100 शुरू में मेरे पास कोई नहीं है, $50 का भी नहीं है, $20 का भी नहीं है, so I do not put any star. $10 की दो bills हैं, so I put 2 stars here. Then $5 bills I do not have, $2 bill I do not have, and $1 की मेरे पास 3 bills हैं, so I put 3 stars here. Similarly, in the second figure, we can see $100 का हमारे पास एक bill है, $50 के एक bill है, so we put 1 star, 1 star. $20 के दो bills हैं, so I put 2 stars. $10 के कुछ नहीं है, so it's empty. $5 का एक है, so I put 1 star. $2 I do not have anything, so I put 0. And for $1 I do not have anything. I do not pick $1 bill, so there is no star here. And in third figure again, you can see $100, 1 star, 50, 0 star, 20, 0 star, $10 के दो bills हैं, so 2 stars, $5, 0, $2 के एक star, and $1 के एक star. So this is called bars and stars model. So I can see if I just change the positions of bars among these 5 stars, so I will get different combinations of bills. अगर इस बार को मैं उठा के यहाँ पे रख दूं, एक step आगे, तो मेरे पास $10 के एक हो जाएगा, $20 के एक हो जाएगा. Or in other words, I can change the position of stars among these bars. जो मेरे पास dividers हैं, अगर मैं इन stars को आगे पीछे करूं, so I will get different combinations. इसी को मैं एक और तरीके से भी represent कर सकता हूं. Bars को मैं 1 से represent कर दूं, stars को मैं 0 से represent कर दूं. So I will get a binary string here. See, one bar bar bar, star star, bar bar bar, star star star. So I get 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0. So this is a binary string, and the length of binary string is number of dividers plus number of stars. The number of dividers मेरे पास 6 है, number of stars मेरे पास 5 है. So I have 5 plus 6. 11th bits की मेरे पास एक binary string आ गई. That's good. So binary string with 6 ones and 5 zeros. So the question is, how many binary string I can get with 6 ones? 11 length की binary string with 6 ones. How many binary strings I can have? So it's the same as changing position of bars among stars, the changing positions of ones among zeros, the changing position of zeros among ones. In how many ways I can do it? So I can pose this question, I can rephrase this question in this way. In how many ways I can get a binary string of length 11 with 6 ones? So the answer is
It's just like if you have 11 objects and you are going to choose 6 objects, and whichever objects you are going to choose, you raise the flag 1. If you are not going to choose, you put 0 over there. So in how many ways I can choose 6 objects out of 11? Answer is 11 to 6. So how many binary strings I can have with 6 ones? The answer is 11 to 6. So how many bars and stars I can distribute bars among the stars? Answer is 11 to 6. So how many ways I can choose 5 currency notes from the 7 type of bills from this cash box is 11 to 6. So here is the answer. So 11 to 6 or 11 to 5 is same, it's symmetric. So I can choose in 11 choose 5 ways, 11 factorial over 5 factorial, 6 factorial, 462 ways. So I can formulate it. I had 7 types of currency bills, so I had 6 divisors. If I have n types of objects, then dividers I will have n minus 1. If I have n types of objects, how many dividers I can get? N minus 1. How many bars I will get? N minus 1. And how many objects I'm going to choose? K. So there are total n minus 1 plus k positions in which I am going to pick up k stars. I have to place k stars among those positions. So number of ways to get k combinations with n elements where objects could be repeated. So it's n plus k minus 1 choose k. या इसको हम कह सकते हैं n plus k minus 1 choose n minus 1 because of symmetry of binomial coefficient. So answer is n plus k minus 1 choose k. It's exactly the same जो हमने यहाँ पे किया when we were distributing pennies among the kids. We were distributing n pennies among k kids. So it was n plus k minus 1 choose k minus 1. So eventually the two problems are same. इसकी हम कुछ और examples करते हैं. So I hope यहाँ तक हर चीज clear है. Suppose that a cookie shop has 4 different kinds of cookies. हमारे पास types कितनी हैं? n types हैं. n is equal to 4. 4 types of cookies. How many different ways we can choose 6 cookies? So k की value is 6. Cookies जो हम choose करें 6. So in how many ways we can choose k cookies? It's just like आपके पास 4 boxes हैं cookies के different types के, and you have to choose 6 cookies of your choice. And how many ways you can pick 6 cookies? So answer should be n plus k minus 1 choose k. So 4 plus 6 minus 1, which is 9, choose 6. So C9 6, yeah, n choose 6, and we can also call it n choose 3. So answer is 84. So there are 84 ways to choose 6 cookies. Okay. So now we make the same problem with more abstraction. इसको हम थोड़ा सा generalize करते हैं. So we write an equation x1 plus x. Sorry. Previous ये वाली cookies वाली. जी नहीं हाँ सर यही वाली. सर ये वाली जरा दोबारा बता देंगे. बेटा it's exactly the same problem जो अभी हमने किया ना. जो हमने करेंसी बिल्स वाला किया उसमें हमारे पास 7 types of currency bills हैं and we had to pick 5 bills. Yes sir. अपनी मर्जी 5 bills. तो अब हमारे पास 4 types के cookies हैं and we have to pick 6 cookies of our own choice. लेकिन सर ये 9 जो है ये हमारी टोटल कलेक्शन है ना जो हम चूज कर रहे हैं. नहीं बेटा नहीं, ये है n plus r minus 1 choose r. So n जो आपके पास टाइप्स हैं प्लस जितने आपने ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं -1.
-1 बिकॉज ऑफ दैट डिवाइडर के n ऑब्जेक्ट्स में हम कितने डिवाइडर्स, सॉरी n टाइप्स में हम कितने डिवाइडर्स लगा सकते हैं, n-1 डिवाइडर्स लगा सकते हैं. And then we have to distribute our r chosen things across those n-1 dividers. So n-1 plus r, choose r, जो r हमने objects choose करने हैं. So in that question there were 4 cookies, 4 types of cookies. So 4-1 dividers हमारे पास आ जाते हैं. And we have to place our 6 cookies across those dividers. So 3 plus 6, 9. 9 हमारे पास यहाँ से आ गया. और to 6 cookies. So जो इस केस में आपके पास ऑब्जेक्ट्स नहीं आ रहे ऊपर. जो पहले तो ये था ना कि n ऑब्जेक्ट्स में से हमने k ऑब्जेक्ट्स चूज किए. वो चीज थी जहाँ रिपीटिशन नहीं होती थी ऑब्जेक्ट्स की, जहाँ पे चीजें रिपीट हो रही हैं. बस बहुत सी चीजें हैं एक ही टाइप की. सो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस थिंग. सो यहाँ पे हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स नहीं है. यहाँ पे आ जाती है टाइप्स प्लस जितने ऑब्जेक्ट चूज करने हैं माइनस बिकॉज ऑफ डिवाइडर, जो जिस तरह हमने अभी डिफाइन किया, डिराइव किया इसको. सो इट इज n plus r minus 1 choose r. So over here in this question, in cookies question, n की वैल्यू is 4 टाइप्स हमारे पास है, तो डिवाइडर हमारे पास क्या होंगे, n-1, 3 dividers, and we have to pick 6 cookies. 3 plus 6, so 9 में हम 9 पोजीशन में हम 6 cookies किस तरह प्लेस कर सकते हैं. तो 9 choose 6. So next question is, if we have this equation x1 plus x2 plus x3 is equal to 11, so how many solutions this equation have where x1, x2, x3 are non-negative integers? Their value could be 0, value could be positive, not negative. Negative हम नहीं करना, वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे. And we see it is exactly the same question जो अभी हमने 2, 3, 4 examples अभी की. Just like look at those fruits problem जो हमने किया था. तीन तरह के fruits थे. x1, let's call x1 as apples, x2 as oranges, and x3 as pears. And total उस problem में we had to pick 4 fruits. So x1 plus x2 plus x3 was going to be equal to 4. यहाँ पे हम कहते हैं कि नहीं, it should be equal to 11. Apples plus oranges plus pears is equal to 11. So in how many ways we can choose 11 fruits from these 3 types? हमारे पास 3 तरह के fruits हैं, तो fruits की जगह हम क्या लेते हैं, 3 तरह के variables हैं, x1 and x3. We have 3 types of variables and their sum should be equal to 11. In how many ways we should choose these 3 variables such that their sum should be 11? It's exactly the same problem. N की value 3 है and we have to choose k which is 11. N plus k minus 1, choose k. So 3 plus 11 minus 1, 13, choose 11. So answer is 78. सर चूज जो है वो k-1 होगा ना? नहीं बेटा, या तो चूज n-1 होगा या चूज k होगा. n plus k-1 चूज k कर लें या n plus k-1 चूज n-1 कर लें. देखें यहाँ पे देखें, we either choose stars or either choose dividers. Dividers हमारे पास जो types हैं, n types है ना, उससे a कम होते हैं, n-1 dividers होते हैं. या you can choose your objects which are key objects. So plus k-1 total possibilities, उसमें से आप की ऑब्जेक्ट्स चूज करें या n-1 डिवाइडर्स चूज करें. So in this question we have n is equal to 3, k is equal to 11. So 11 plus 1 which is 13. So 13 choose 11 आप कर सकते हैं या 13 choose 2 कर सकते हैं. k-1 करने से आंसर फर्क हो जाएगा. ठीक है. We have to pick up the objects, 11 objects. So 13 choose 11. ठीक है. Okay. And next question
we can start, but I think next question हम अगली क्लास में करते हैं, क्योंकि दूसरे सेक्शन में भी we have stopped till here. So अगर जहाँ तक भी आप इसको डाइजेस्ट कर लें, it would be good. इसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इस टेबल में जो अभी तक हमने चीजें सीखी हैं. It's about permutations and combinations with and without repetition. कि ऑब्जेक्ट्स आपके पास रिपीट हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स आपके पास रिपीट नहीं हो सकते. So we have like R permutations given n objects. हमारे पास n objects हैं and we are going to choose R objects among n objects. कितनी permutations हैं if repetition is not allowed? So it's obviously NPR. NPR. N में से R objects की permutations. And formula we have got is NPR is equal to n factorial over n minus R factorial. Similarly, R combinations, we have n objects and we have to make R combinations of among n objects. N में से हमने R objects choose करने हैं. And repetition is not allowed. In how many ways we can use n choose R, NCR. So the formula is n factorial over R factorial into n minus R factorial. That's fine. And then we saw, and we have we have seen it multiple times, and today again we discussed R permutations. When repetition is allowed, one object may appear again and again, R times जितनी बार भी हमारे पास जितनी permutation है. So this is going to be n raised to power 4. Sorry, n raised to power R. ठीक हो गया. And the last one, it is quite interesting thing. R combinations when repetition is allowed. So ये अभी हमने derive किया. So it's going to be n plus R minus 1. N types के objects हैं and those objects can be repeated and we have to choose R objects. So it's going to be n plus R minus 1. Choose R. सर ये वाला फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है? ये वही है जो अभी हमने किया. वो चूज शक्ल में लिखा था, ये उसको हमने उसको खोल के फैक्टोरियल की शक्ल में लिख लिया. So you can see n plus R minus 1 न्यूमरेटर में, choose R. You can say choose n minus 1 anything. It's exactly the same thing जो यहाँ पे नजर आ रही है. n plus R minus 1 choose R. Yeah, n plus R minus 1 n minus 1. So it's same thing. So n plus R minus 1 choose R. उसको अगर हम ओपन करेंगे, so it's going to be n plus R minus 1 factorial over R factorial into n minus 1 factorial.